breaking news, we are getting to you the inside track of what really happened in the Maharashtra Assembly a little earlier. Do remember the monsoon session has just begun. There was a lot of ruckus, a lot of commotion. This is a footage right now that you see on your screens being released by the NCP, where they claim that this video shows when the ruckus literally happened. Now, the result of this ruckus, right now, remember, 12 of the BJP MLAs have been suspended by the speaker for over a year. Now, the NCP here has released this entire footage that you see on your screens playing out. These are 12 BJP MLAs, including Ashish Shelar, who have now been suspended by the speaker. And the NCP alleges that this is the proof of the ruckus that was caused by the BJP MLAs. Our colleague Yesha is tracking that story and joins us on the phone line right now. Yesha, we are looking at this clip right now of footage that has been released by the NCP. What does the party say? What do they claim? So the NCP leader Nawab Malik has shared this particular video on his Twitter handle, wherein he has alleged that it was the BJP MLAs who had stormed into the cabin of the speaker, the person who was on the speaker's chair, that is Bhaskar Jadhav, and they had stormed into his cabin and also insulted him. As a result of which, there was this entire discussion which came up in the assembly by voice vote. It was these 12 MLAs of BJP, which includes Ashish Shelar and Atul Bhatkalkar, among others, who were suspended. However, on the other hand, what we've seen is that the BJP MLAs in question over here have said that it was not their fault. They had just gone inside to speak to Bhaskar Jadhav, but it was, and they had also apologized to him for following that. And now what we see is in a few minutes from now, these BJP leaders are expected to go meet Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan. And as a result of it, we've seen that these 12 people, these 12 MLAs, who have been suspended for a year from the proceedings of the House, would now be meeting the governor to understand more about this. But, however, it is former Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, was alleged that this is a ploy by the Maharashtra Vikas Aghadi government in order to not have these MLAs be a part of the speaker election. Yes. Okay, Yesha, why don't you stay with us? Because, let's put out the entire story. This is what the NCP alleges. Now, there is a different version that is being spoken of by the BJP. In fact, the leader of the opposition there, Devendra Fadnavis, and also the former chief minister of the state, has come forward to say, Yesha, that all this is nothing but baseless allegations. He says we were trying to put forward our point and we did not create a ruckus. He says we are being falsely targeted, Yesha. So we play out the reaction we just heard from Devendra Fadnavis. Also, I think we have a reaction from Ashish Shelar. Let's quickly make way to listen into them. आज जिस प्रकार से सभागृह में ओबीसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे, इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया। उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे, लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहाँ पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सब ने सुनी है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सब ने सुनी है किसने गाली दी है और ये सत्य बाहर भी आएगा। लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई, हमारे आशीष शेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनसे क्षमा भी मांगी। सब लोग गले मिले, अपने अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। आज सदन में
जिस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पे हुए और एक्चुअली जो घटना हुई है, ये दोनों का कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले तो भाजपा के कोई भी सदस्य ने किसी भी सम्माननीय सदस्य या तालिका अध्यक्ष को गाली गलौज नहीं किया। गाली गलौज करने वाले लोग तो शिवसेना के थे। बावजूद उसके ये कार्रवाई हुई है, तो इसका वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूं कि तालिबानी पद्धति से सरकार चलाने वालों को भी शर्म आ जाए। ऐसे नए तालिबानी ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं। इनका स्वरूप नया तालिबानी इस प्रकार से ही किया जा सकता है। इस प्रकार से ये लोग महाराष्ट्र में कारोबार करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे सदन ने देखा, प्रेस गैलरी ने देखा कि जहां पर ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी बात कर रहे थे, उनको बात नहीं करने दिया गया और इसके खिलाफ स्वाभाविक कानूनन तरीके से अपना त्रागा व्यक्त करने के लिए जो भाजपा के सदस्य पीठासीन अधिकारी के यहाँ पहुंचे, उनको भी शांत करके नीचे लाने का काम ये स्वयं मैंने किया। ये प्रेस गैलरी ने भी देखा और सब ने देखा। बावजूद उसके मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है। बाद में विधानसभा अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष चेंबर में जो घटना घटी, उसमें गाली गलौज और मारामारी शिवसेना के लोगों ने किया है। So we heard both Devendra Fadnavis and Ashish Shelar making it very, very clear that this was not the doing of the BJP. In fact, they again and again reiterate that we went to the speaker, we wanted to pacify the sentiments, and we in fact also apologized, is what Ashish Shelar says. And he wants to know then why is the BJP being targeted? Remember, 12 MLAs, including Ashish Shelar, have been suspended for a year by the speaker. Now, what happens next is that they are all now planning to approach the governor regarding the same, whereas the NCP here claims that this is a video that again is a proof of what the BJP was up to. We are tracking that story closely, with this heading into a quick break.